हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो है क्या हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो देखिए, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस या जगह जगह पर भी डिपेंड करता है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए या हम अपना काम किसी और को जो है हवाले करें। तो इट डिपेंड्स। और अगर हम देखें सो फ्रॉम स्टूडेंट्स उसके बारे में भी बात करेंगे, अबाउट बिजनेसमैन, टीचर्स एंड ऑलमोस्ट एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टूडेंट्स। तो देखिए, स्टूडेंट्स दे नीड टू वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ, यानी कि जो उनका काम है दे हैव टू डू इट बाय देयर ओन सेल्फ, क्योंकि उन्हें टास्क मिलता है, उन्हें अपना काम मिलता है टू गेट देम बेटर। और उसमें जो है अगर वो स्टूडेंट अपना काम नहीं करता एंड ही इज जस्ट वेटिंग फॉर अदर्स टू डू और फिर वो उससे कॉपी करेगा, सो दैट्स नॉट रियली हेल्पफुल। ना उसके लिए अच्छा है और ना जो है उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, बिकॉज वो जो एनर्जी वो ज़ाया कर रहा है, वो जो एनर्जी वो स्पेंड कर रहा है, वो जो टाइम वो स्पेंड कर रहा है, इट नीड्स टू बी प्रोडक्टिव। और वो प्रोडक्टिव तब होगा जब वो अपना काम खुद करेगा। सो फॉर स्टूडेंट्स दे नीड टू डू देयर वर्क देमसेल्फ। और अगर फिर जो काम होते हैं विच दे नो देमसेल्फ, अगर वो फिर जो है उनके पास टाइम नहीं होता एंड दे आस्क देयर फ्रेंड टू डू दैट, फिर वो सही है। लेकिन अगर उन्हें नहीं आता एंड दे आर आस्किंग समवन एल्स टू डू, so that's not useful for them. Even if they are asking their tutors to do it for them, so it's not really helpful. तो उन्हें जो है अपना काम खुद करना चाहिए रिलेटेड टू एकेडमिक्स और दिस थिंग। फिर जो उनका जो बाकी काम है अगर प्रोफेशनल हो तो फिर अगर उसमें जो है जो काम उनके लिए आसान हो वो जो है दूसरों को दे सकते हैं। सिंपल। नाउ द सेकेंड वन इज द पीपल नॉर्मल पीपल जिनका अपना जॉब होता है, यानी कि दे आर हायर्ड और या वो जो है इधर उधर काम करते हैं और दे आर जस्ट एट होम। तो उन लोगों का तो स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, लेकिन जो उनका जॉब होता है द जॉब पीपल, तो उनका जो है दे नीड टू ऑल्सो डू थिंग्स देमसेल्फ, क्योंकि उसमें जो है उनकी स्किल्स का पता चलता है, हाउ मच गुड दे आर। तो जब एक बंदा अपना काम खुद करेगा एंड नॉट आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प, यानी कि उनके लिए करो तो मेरे लिए ये काम करो, सो देन दैट पर्सन ही कैन गेट बेटर। लेकिन अगर वो किसी और की मदद लेगा कि यार ये करो मेरे लिए, ये करो मेरे लिए, एंड ही इज जस्ट ऑर्डरिंग अदर्स टू डू इट फॉर हिम, सो देन ही कैन नॉट गेट बेटर। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, सो यू नीड टू बी हैविंग डूइंग योर वर्क योरसेल्फ। खुद जिम्मेदारी लेनी है हर चीज़ की, बिकॉज यू आर नॉट एट द बेटर स्टेज इन विच यू कैन गिव ऑर्डर्स टू अदर्स। यानी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपना काम किसी और को देकर उससे करवाना, दैट्स नॉट फॉर पर्सन फॉर जॉब पर्सन इन द प्लेस वर्क प्लेस जहाँ पर वो काम करते हैं, सो इट्स नॉट सुटेबल फॉर हिम। नंबर 3, बिजनेसमैन। देखिए, बिजनेसमैन के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अगर उसका एक बिजनेस हो देन इट्स अ लिटिल बिट इजी फॉर हिम टू कवर इट। लेकिन इफ ही हैज मल्टीपल बिजनेसेस एट मल्टीपल प्लेसेस, डिफरेंट एरियाज, तो फिर उसका जो काम है ही नीड्स टू गिव इट टू समवन एल्स, यानी कि जो द पर्सन हु ही बिलीव्स ऑन, हु हैज ट्रस्ट, उस बंदे को देना चाहिए अपना काम ताकि वो कंप्लीट करे, क्योंकि उसके पास पैसा भी है, he can hire someone for doing that। तो वो जो है अपना काम जो है they can give it to some delegates so that they can do that work। तो उनका जो है they can give those tasks, क्योंकि उनका जो गोल है, अल्टीमेट गोल, that's making those business better। उनका जो गोल है वो है लोगों को जॉब देना। ये जो छोटे छोटे टास्क है then those tasks should be given to someone else। और वो बिजनेसमैन वो जो है ही शुड बी फ्री फ्रॉम टेंशंस, ताकि सिर्फ वो जो है फोकस करें ऑन दैट बिजनेस। लेकिन अफसोस की बात ये है, जो बिजनेसमैन है वो अपना काम खुद ही करते हैं, यानी कि जो भी सेट करना हो, जो भी करना हो, ही डज इट बाय हिमसेल्फ, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने जो है और बिजनेसेस बनाने, यू हैव टू वर्क मोर हार्डर ताकि आप अपने बिजनेस को ठीक करें।
اس کے ساتھ ساتھ سوشل کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا اپنا گول ہے، جو مین ٹارگٹ ہے، اس پر آپ جو ہے زیادہ توجہ رکھیں، اینڈ جو اپنا مائنڈ ہے، ٹینشن ہے، اسے اپنے آپ کو دور رکھیں. اس سے جو ہے آپ جو وہ ہے یور ورک دیٹ ول بیکم ایون ایزیئر، اور پروڈکٹیو بھی ہو جائے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. پھر اس کے بعد جو آتا ہے کہ ڈیپینڈس فرام پلیسز ٹو پلیسز، جگہ جگہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بندہ وہ کس طرح اپنا ٹاسک کرتا ہے. سو اٹس ناٹ نیسیسری ایوری ٹائم دیٹ اب جو کڈ ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنا کام خود کرے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ جو جاب پرسن ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ کسی اور کو دے دے، یا اپنے کام جو ہے ہر وقت ہی خود کرے. It's not necessary for a businessman to do his work everything by himself. کہ وہ کنٹرول کرنے. No, he has the power of money, he has more powers. So وہ اس کی مدد سے جو ہے وہ چیزیں کر سکتا ہے by other persons. تو اس طرح جو ہے you can make your work productive as well as آپ جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آخری میں ایک کنکلوژن دینا چاہوں گا، and that is doing your own work by yourself is most efficient. لیکن if you have multiple tasks، پھر جو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے select those, do it yourself. جو باقی ہے which are not really necessary, not really important، وہ ٹاسک جو ہے وہ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو he will do it for you. اس سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا، اس سے جو ہے آپ کی انرجی بھی سیو ہوگی، and you will not have to spend or waste more energy on that. اور اگر آپ جو امپورٹنٹ ٹاسک خود کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اچھا بنائے گا، وہ آپ کو اسکلز پرووائڈ کرے گا، اینڈ اٹ ول میک یو مور افیکٹو. تو اگر آپ جو کر رہے ہیں سو آپ کوالیفائی بھی کر سکتے ہیں، یو کین آلسو لیول اپ. سو آئی ہوپ دیٹ آپ لوگوں نے آج کچھ سیکھا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ دیٹ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھنا ہے so you will have to do those things yourself. And if you are developed، پھر اپنے جو آپ کو چیزیں آتی ہے جو امپورٹنٹ نہیں ہے نیسیسری ٹاسک، وہ کسی اور کو دے دیں، سمپل. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ، اینڈ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.